Okay, so now let's apply whatever we have learned about single section transformer under the theory of small reflection. If we have a circuit like this, in which we have a number of uh, transformers connected in cascade. So let me draw this circuit and then we will apply the theory. Okay, the circuit that I have drawn, it consists of n number of quarter wave transformer connected between main transmission and load. So this is the first quarter wave transformer, second quarter wave transformer, third quarter wave transformer, up to n number of quarter wave transformers. So this is a generalized, so I will call it, this is n section transformer. So of course, n can be 2, it can be 3, it can be 4. So it is up to the designer that how many sections he want to connect between the load and main transmission line. And of course, we will derive an expression, but it is obvious that why I will use more section, because the purpose of multi-section transformer, which I pointed out previously, is to improve the bandwidth performance of our quarter wave transformer. So if you use more sections, so that will help you to improve the bandwidth performance even further. You can see that I have represented the individual characteristic impedance. So this is the first quarter wave transformer. Its characteristic impedance is represented by Z1. The second quarter wave transformer is represented by Z2, and so on. And another thing that you can see is the total reflection coefficient. So from our circuit point of view, this is the point where we are interested to find out that how much will be the reflection. Okay. So any signal which is coming from the generator or source, how much is the total reflection that is represented by this gamma? But you can see that I have also defined some other reflection coefficients. So what is the
reflection coefficient from the first point of discontinuity. So this is the first point of discontinuity. And I have represented the reflection coefficient at this point by gamma 0 or gamma naught. This is the second point of discontinuity. So how much signal will be reflected? That is represented by gamma 1. So gamma naught, what will be its value? It will depend upon the relationship between Z1 and Z0. How much will be gamma 1? That will depend upon the relationship between Z2 and Z1. And similarly, how much will be gamma 2? It will depend on Z3 and Z2. So if we assume that there is small discontinuity at each point of discontinuity. So Z1 is not much different from Z0. Z2 is not much different from Z1. So based on that, we can find out the expression of the total reflection coefficient must be according to this. So total reflection coefficient gamma must be equal to the reflection coefficient from the first point of discontinuity जिसको मैंने gamma naught से represent किया हुआ मैंने इसको include कर लिया. Then we need to add reflection from the second point of discontinuity, which is gamma 1, but because this point is theta, so signal will travel theta and then it will again travel theta. So from this point of discontinuity, whatever is the reflection, we need to add 2 theta. So e power minus j 2 theta. Okay. Similarly, the reflection from the third point of discontinuity. Just give me 1 minute. I have to attend. Okay, so the third term will be equal to gamma 2 used to power minus j 4 theta. Similarly, next term will be gamma 3 used to power minus j 6 theta. So all the way up to the last term, gamma n used to power minus j 2 n theta. So how I have written this statement or this expression, I have used the theory of small reflection. So this total reflection coefficient gamma, it will be addition of individual reflection coefficient from each point of discontinuity along with the associated phase, because when signal travels, let me further illustrate, when signal is traveling, so any signal that manages to reach to this point, and when it is reflected, how much will be the reflection? That will be dependent on gamma n. But then this signal, it will travel back and then it will appear on this side. And of course, it has to travel 2 times theta, and there are n number of sections, so n times 2 theta, which you can see over here. So this is a simple expression for a multi-section transformer that we will make use of to further derive some interesting results about multi-section transformer. We can, in order to get a better understanding of what is the implication of this result,
Let me use some assumptions so that we can relate this expression to a very well-known expression that you people already know from signal and systems. Okay. So first assumption is assume that transformer is made symmetrical so that. So what is the meaning of symmetrical? The reflection from the first point of discontinuity is equal to the reflection from the last point of discontinuity. And reflection from the second point of discontinuity is equal to reflection from the second last point of discontinuity. Reflection from the third point of discontinuity must be equal to reflection from the third last point of discontinuity, and so on. This is the meaning of symmetrical. So it means when you design this multi-section transformer in a symmetrical configuration, then what will happen? This gamma 0 will be equal to gamma n. Gamma 1 will be equal to gamma n minus 1. Gamma 2 will be equal to somewhere over here gamma n minus 3. This is the meaning of symmetrical. Okay. So if we design our circuit like this, so then what we can do? We can make a substitution that we already have gamma 0. So when you make use of this, so gamma capital N की जगह हम क्या लिख देंगे gamma 1 लिख देंगे ठीक है and just to make sure that you understood this idea इस expression से जो पहली इस term से पहले जो term होगी वो क्या होगी उसमें क्या लिखा होगा gamma n minus 1 होगा और होगा e to power minus j 2 n minus 1 इसका मतलब ये हुआ कि gamma n minus 1 की जगह हम क्या लिख देंगे gamma 1 लिख देंगे. So as a result, after you make this substitution in the original result, you will get pair of terms. There will be two terms which will involve gamma naught. There will be two terms that will involve gamma 1. There will be two terms that will involve gamma 2. Okay, so let me write this. कि हमारे पास result क्या होगा एक और चीज हम देख लेते हैं and that is चलिए इसको बाद में कर लेते हैं. So we have gamma naught plus इसके साथ जो corresponding pair term होगी वो क्या हो जाएगी gamma 0 e to power minus j 2 n theta. मैं basically की pair terms को लिख रहा हूँ. So let me go back. This was the term already there. और इसके साथ में इसकी जो corresponding pair है वो कौन सा आ गया ये वाला आ गया जिसमें हमने gamma n को किससे replace कर दिया gamma naught से. ठीक हो गया तो मैंने इसको साथ में लिख दिया. सिमिलरली अब हम क्या करेंगे इस टर्म को इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ टर्म के साथ ऐड कर देंगे जो कि ये वाली. ठीक है सो लेट मी राइट डाउन वी विल एंड अप विथ अनदर पेयर gamma 1 e power minus j 2 theta plus gamma 1 e power minus j 2 n minus 1. एक ये पेयर ऑफ टर्म होगी. Let me write the third one and I think this will be enough for you to get the idea. हमारे पास gamma 2 के साथ क्या होगा gamma 2 e power minus j 2 n minus 2 theta and so on. ठीक है if you take this term as common e power minus j n theta. So what will be left? Let's look at it.
यहाँ पे आपके पास आ जाएगा गेमा नॉट ई पावर प्लस जे एन थीटा प्लस गेमा नॉट ई पावर माइनस जे एन थीटा। सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा आपके पास, गेमा वन ई पावर प्लस जे एन माइनस टू थीटा प्लस गेमा वन ई पावर माइनस जे एन माइनस टू थीटा। एंड सिमिलरली बाकी टर्म के लिए भी आप कर लेंगे, ठीक है। Then you can take this gamma naught common from this expression, आप gamma वन को कॉमन ले लेंगे। तो आप gamma नॉट को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास विद इन ब्रैकेट्स क्या आ जाएगा, e प्लस जे एन थीटा प्लस ई पावर माइनस जे एन थीटा। इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? e प्लस जे एन थीटा प्लस ई पावर माइनस जे एन थीटा को हम किससे रिप्लेस कर सकते 2 cos n theta. हैं? यस, इसको हम रिप्लेस करेंगे 2 cos n थीटा। सिमिलरली इस टर्म के साथ क्या होगा, गेमा वन और यहाँ पे आ जाएगा 2 cos n माइनस टू थीटा आएगा। थर्ड टर्म जो कि मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है बल्कि आप इजिली से डिराइव कर सकते हैं, यहाँ से क्या आएगा गेमा टू और यहाँ से आ जाएगा 2 cos ऑफ n माइनस फोर थीटा एंड सो ऑन। सो ये जो टू फैक्टर है विच विल बी देयर विद एवरी टर्म, इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। सो हमारे पास आउटसाइड आ जाएगा t 2 into e power minus j n theta और विद इन ब्रैकेट्स हमारे पास होगा गेमा नॉट cos of n theta plus gamma 1 cos of n minus 2 theta plus gamma 2 cos of n minus 4 theta and so on. Now what is the importance of this result जो हमने derive किया है to get an idea about this result? जो original result था वो हमारे पास ये था, but it was not possible for us to get an interpretation कि इसका क्या फायदा हुआ। सिंगल सेक्शन जो ट्रांसफॉर्मर पहले पढ़ चुके हैं, जिसका रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट हमने डिराइव किया था कि आपके पास सिंगल सेक्शन था, मल्टी सेक्शन यूज करने का फायदा क्या हुआ, उसको हमने एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए किया। नाउ इफ यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को देख के आपको कैन यू मेक एनी कमेंट ऑन दिस एक्सप्रेशन के इस एक्सप्रेशन को आप किस तरह इंटरप्रेट करेंगे कि ये क्या शो कर रहा है आपको? सर थीटा और गेमा के दरमियान रिलेशन। लेट मी गिव यू अ हिंट। इसमें जो आपको ये कॉस फंक्शन नजर आ रहा है, कॉस ऑफ एन थीटा, इस तरह की कोई एक्सप्रेशन आप यूज कर चुके हैं कहीं पहले? Surface shift. अज्यूमिंग, मैं इसको और भी क्लियर कर लेता हूँ कि इस वक्त जो हमारा ये रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है, इट्स ऑब्वियस कि जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट हमारा होगा ये फंक्शन ऑफ थीटा है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे गैमा लिखा हुआ है बट इस एक्सप्रेशन से क्लियरली हमें ऑब्वियस है कि हमारे रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट थीटा का फंक्शन, ठीक है। और किस तरह का थीटा का फंक्शन है, cos n theta, cos n minus 2 theta, cos n minus 4 theta, cos n minus 6 theta। तो ये क्या किस तरह का, आपको इस तरह की कोई आपने चीज पढ़ी है किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में?
ये सही है, 4 ईयर सीरीज। 4 years yes 4 this years is series बन रहा है सर। yes this is what I was expecting कि आपने आंसर देना था। इट इज काइंड ऑफ अ 4 year सीरीज है, और 4 year सीरीज को अगर आप थोड़ा सा याद करें, उसमें हमारा बेसिक वो क्या था कि any signal of course if it is periodic it can be represented as a summation of sinusoidal signals। और इसका मतलब है कि कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है उसको हमने अगर कंस्ट्रक्ट करना हो तो हम उसमें साइनोसाइडल कंपोनेंट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फिर उसके हार्मोनिक्स ऐड करके हम कोई भी सिग्नल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इंटरप्रेट करें कि ये हमारा एक फंक्शन है जिसको हमने कंस्ट्रक्ट करना है, और वो कंस्ट्रक्ट हम कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर, इसको आप फोरियर कोफिशिएंट्स कह सकते हैं, लेट मी अगर आप इसको कहें, ये जो आपके पास है ये फोरियर कोफिशिएंट्स आप कह सकते हैं। So by choosing the appropriate Fourier coefficients, we can synthesize any function gamma. So let me write this statement. We can synthesize any desired और सिग्नल एंड सिस्टम पर्सपेक्टिव से आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को सिग्नल कह सकते हैं कि वी कैन सिंथेसाइज एनी डिजायर्ड सिग्नल। हमारे केस में जो सिग्नल है ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ सिग्नल इन इट्स ट्रू मीनिंग, ये तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, बट वी कैन से कि ये सिग्नल है। So we can synthesize any desired reflection coefficient response, इसको हम gamma theta कह रहे हैं, as a function of frequency। Of course we know कि theta को भी हम frequency कह सकते हैं based on the idea कि theta का ताल्लुक frequency के साथ है, beta l, by properly choosing gamma n, जिनको मैं relate कर रहा हूँ किस चीज के साथ, as if they are Fourier coefficients, and using enough sections, that is it। फोरियर सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें पता है कि अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करते हैं तो फिर हम इवन स्क्वायर वेव को भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने हम कम नंबर ऑफ टर्म्स यूज करते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे सिग्नल की जो शेप है वो एग्जैक्ट सिग्नल की तरह नहीं होगी। इफ यू जस्ट मैं फर्दर आपको अगर याद कराऊं, अगर मैं इस तरह का सिग्नल है, अगर मैं सिंथेसाइज करूंगा और मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म यूज नहीं करूंगा, सो यू रिमेंबर कि यहाँ पे आपके पास इस तरह का कुछ वो आएगा। ठीक है, तो जितना हम क्लियर, जितना हम एक्यूरेट सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं इतना हमें एन को बढ़ाना पड़ता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये वही चीज है। ठीक है, सो दिस इज, अगर इसको मैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन दूं, जब हमने सिंगल सेक्शन क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया था, वेदर विद रिस्पेक्ट टू थीटा और विद रिस्पेक्ट टू एफ, जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जो मैग्नीट्यूड का रिस्पांस था वो इस तरह था, कोसाइन फंक्शन की तरह था। सिंगल सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, सिंगल सेक्शन के लिए हमारे पास रिस्पांस इस तरह का होगा, और बेस्ड ऑन दैट अगर हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इस बेस के ऊपर हमारे पास जो बैंडविड्थ हमें मिल रही थी वो ये थी। अब ये जो बैंडविड्थ मुझे मिल रही है ये आपके पास कौन से ट्रांसफार्मर के लिए है? सिंगल सेक्शन, सिंगल सेक्शन। अगर मैं मल्टी सेक्शन ट्रांसफार्मर यूज करूंगा
So maybe I can get this behavior. I may get this behavior. Just an example. ये आपके पास कौन से सेक्शन के लिए, इस केस में अगर आप देखें हाउ मच इज द बैंडविड्थ, अब आपके पास बैंडविड्थ यहां से, सो यू कैन क्लियरली सी कि आपके पास सिंगल सेक्शन जब आप यूज कर रहे थे तो आपकी बैंडविड्थ ये थी, और जब आप मल्टी सेक्शन ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं तो आपके पास ये सारी बैंड, तो आप देख सकते हैं कि आपकी, ऑफ कोर्स मैंने सिमेट्रिक नहीं बनाया, लेकिन ऑब्वियस के पहले बैंडविड्थ ये थी, अब बैंडविड्थ ये हो गई, तो आपने बैंडविड्थ को इम्प्रूव कर दिया। अब ये जो मल्टी सेक्शन का रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, इसका मतलब है कि कोई भी शेप में अगर कोई और मेरी रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि मैं इस तरह का रिस्पॉन्स चाहता हूँ, सॉरी, सो ये जो फंक्शन है या रिस्पॉन्स है, ये कौन सा है, ये किस चीज़ का बिहेवियर है, गैमा थीटा है, और गैमा थीटा जो है वो उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। सो बाय प्रॉपरली गैमा नॉट, गैमा वन, गैमा टू और एन को सेलेक्ट करके हम कोई भी रिस्पॉन्स इससे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जो मैंने ये स्टेटमेंट दी है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस, ग्राफिकली मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या मतलब है, कि वी कैन सिंथेसाइज एनी डिजायर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो मेरा अगर डिजायर्ड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बिहेवियर मैं चाहता हूँ कि इस किस्म का हो, दिस ऑरेंज कलर, तो मैं बाय प्रॉपरली नंबर ऑफ सेक्शन सेलेक्ट करके और फिर गैमा जीरो और गैमा वन की डिजायर्ड वैल्यू सेलेक्ट करके मैं इस किस्म का रिस्पॉन्स भी अचीव कर सकता हूँ, जो कि सिंगल सेक्शन के साथ पॉसिबल नहीं था। सिंगल सेक्शन का रिस्पॉन्स हमेशा ऐसे होगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद इट। लेकिन मल्टी सेक्शन में आप देख रहे हैं कि इस तरह का रिस्पॉन्स भी आप बना सकते हैं, इस तरह का भी बना सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मल्टी सेक्शन ट्रांसफॉर्म। नाउ लेट्स फाइंड आउट, ये तो मैंने, आप कह सकते हैं कि एक जनरलाइज हमने एक स्टेटमेंट दे दी है कि अगर हमने क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर मैचिंग सर्किट की बैंडविड्थ इंप्रूव करनी है तो सिंगल सेक्शन के बजाय हमें मल्टी सेक्शन ट्रांसफॉर्मर यूज करना पड़ेगा। बट द क्वेश्चन इज हाउ यू आर गोइंग टू डिजाइन इट। सो डिजाइन के लिए हम एक स्पेसिफिक मल्टी सेक्शन ट्रांसफॉर्मर को देख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल मल्टी सेक्शन मैचिंग ट्रांसफॉर्मर। सो वन ऑफ द प्रैक्टिकल मल्टी सेक्शन ट्रांसफॉर्मर जो हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं बाइनोमियल मल्टी सेक्शन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, वी विल फाइंड आउट कि इसको हम बाइनोमियल क्यों कहते हैं इन अ शॉर्ट व्हाइल। पहले हम इसकी एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं कि अगर हम बाइनोमियल मल्टी सेक्शन मैचिंग ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं तो उसका फायदा क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो मैं इसको पहले स्टेटमेंट लेता हूँ, फिर इसको डिफाइन कर लेता हूँ। पास बैंड का वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, बट आई विल डिफाइन इट कि पास बैंड का मतलब क्या। पास बैंड रिस्पॉन्स of a binomial matching transformer is optimum, is optimum in the sense that for a given number of sections, और सेक्शन को हम बेसिकली n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, the response is as
flat as possible near the designed frequency. इस रिस्पॉन्स को फिर हम एक और नाम भी देते हैं. This type of response is also known as maximally flat. Maximally flat. अब ये जो मैंने वर्ड यूज किया है पास बैंड रिस्पॉन्स. सो इफ आई गो बैक टू दिस फिगर, ये जो है इसको आप पास बैंड कहें. फिर रिमेंबर जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट गामा एम से कम होना चाहिए. सो जिस रेंज में मुझे ये बिहेवियर मिल रहा है, एक्सेप्टेबल बिहेवियर मिल रहा है ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, उसको हम कहते हैं कि इसका पास बैंड रिस्पॉन्स. सो दिस इज समथिंग जो ओके ऑफ कोर्स फिल्टर जो आप पढ़ रहे होंगे डीएसपी कोर्स में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर आपको हो रहा है कि पास बैंड मीन कि जो हमारी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जिनको हम पास करना चाहते हैं तो पास बैंड है. इस केस में क्योंकि reflection coefficient is not a signal but it is the reflection coefficient behavior of our matching circuit, तो हम इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जिस रेंज में हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का एक्सेप्टेबल बिहेवियर मिल रहा है उसको हम कह रहे हैं कि इसका पास बैंड. ठीक है. सो अगर आप एक मल्टी सेक्शन ट्रांसफॉर्मर डिजाइन करेंगे बेस्ड ऑन दिस आइडिया जिसको हम बाइनोमियल कह रहे हैं, तो बाइनोमियल मैचिंग ट्रांसफॉर्मर का स्ट्रिक्ट फीचर क्या है कि इसका जो रिस्पॉन्स है डिजाइन फ्रीक्वेंसी, अगर हमारी ये डिजाइन फ्रीक्वेंसी है लेट से, इसके करीब करीब जो इसका रिस्पॉन्स होगा ये बड़ा फ्लैट किस्म का होगा. ठीक है. ठीक है. इस वजह से इसको हम मैक्सिमली फ्लैट रिस्पॉन्स कहते हैं. नाउ व्हाट इज द डिजाइन इक्वेशन फॉर, अगर आपने मल्टी सेक्शन ट्रांसफॉर्मर बनाना है बेस्ड ऑन बाइनोमियल आइडिया, तो उसका रिस्पॉन्स किस तरह फाइंड करेंगे. एक तो रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है कि अगर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का अगर हम डेरिवेटिव लें और फर्स्ट n माइनस वन डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं हमारे पास कैपिटल N क्या चीज़ है, कैपिटल N जो है कि हमने मल्टी सेक्शन ट्रांसफॉर्मर में कितने सेक्शंस यूज किए हैं. लेट्स से अगर हमने 5 यूज किए हैं, इसका मतलब है कि हम फर्स्ट 4 डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं. फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव. अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो ये आपके पास जीरो होना चाहिए. कहाँ पे होना जीरो होना चाहिए? एट सेंटर फ्रीक्वेंसी. और सेंटर फ्रीक्वेंसी हम किसे कह रहे हैं? जो हमारी डिजाइन फ्रीक्वेंसी जिसको आप एफ नॉट कहते हैं. सो ये मैंने एक क्राइटेरिया किस चीज के लिए लिखा है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का बिहेवियर किस तरह का हो, जिसको हमने नाम दिया हुआ है मैक्सिमली फ्लैट रिस्पॉन्स. सो दिस इज फॉर मैक्सिमली फ्लैट रिस्पॉन्स. सो अगर हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का बिहेवियर इस तरह का हो, जो मैंने आपको शो किया कि पास बैंड में ये बिल्कुल फ्लैट हो, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के जो फर्स्ट n माइनस वन डेरिवेटिव होने चाहिए किस जगह पे? सेंटर फ्रीक्वेंसी पे, वो जीरो के बराबर होने चाहिए. अब इस किस्म का कौन सा फंक्शन है? इसका मतलब है कि द क्वेश्चन इज कि गामा थीटा किस तरह का फंक्शन हो जिस पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो. सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इज कि अगर हम गामा थीटा को इसके बराबर ले लें, ए वन प्लस ई पावर माइनस जे
to theta raised to the power n. इस फंक्शन को आप चेक कर लें बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें एट एफ नॉट, वो भी जीरो आएगा. फिर आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लें और फिर डिजाइन फ्रीक्वेंसी पे इसको देखें, आपके पास हमेशा आंसर जीरो आएगा. ठीक है. इसका मैग्नीट्यूड हम देख लेते हैं. मैग्नीट्यूड, सो यू कैन सी कि ये इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. यू ऑल नो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड में हम इंटरेस्टेड है. मैं मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूँ पहले. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द मैग्नीट्यूड? सो वी आर इंटरेस्टेड कि इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लें. ठीक है. और इसमें ऑफ कोर्स ये क्या चीज है? दिस इज सम अननोन कांस्टेंट जो हमने फाइंड करना है. लेट मी टेक e power minus j theta as common. सो यहाँ पे हो जाएगा e प्लस जे थीटा हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा e पावर माइनस जे थीटा. दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय cos थीटा. ये आपके पास 1 के बराबर है. सॉरी, यहाँ पे 2 भी है तो मैं यहाँ 2 to the power n को बाहर लेता हूँ. Let's continue this discussion in the next session. Okay.